In the last example, what we have seen, that there was a normal variable of type integer and one variable of type character, and we have seen their behavior with respect to the pointer. तो pointer का भी behavior हमने इसके respect में आपको दिखाया, जहाँ कैसे एक normal variable declare करते हैं, एक integer variable और एक integer pointer, simultaneously एक character variable and a character pointer. So इसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है और यहाँ मेमोरी में ये चीज़ें कैसे स्टोर हो रही हैं। एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर वैल्यूज होता है जबकि पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस होता है. सो इन दिस सेक्शन we will see how to see the address of pointer and what is the meaning of star operator and all. So जब कभी भी हम एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर स्टार p, suppose p is a pointer. So यहाँ p is the name, star denote that this variable is a pointer variable, and int denote that whatever this p contains is the address of an integer. So if I can draw this way, so ये p है and इसका अपना कोई एक address हो सकता है. Suppose p010 is the address, and this contains the address of an integer, right? Any integer variable. तो अगर मैं इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ int a and a contains 5, right? So now if I write p is equal to address of a, what it means? It means कि a एक ऐसा वेरिएबल है और a का अपना कोई एड्रेस है 1010. This line says that a has a value 5. Now the moment we have written this line, it means that we have created one memory for a variable naming p, and this is a special kind of variable, that is why इसके पीछे ये star लगा हुआ है, such that कि ये normal variable जब जहाँ वैल्यू रखता है वहीं ये वेरिएबल क्या रखेगा, एड्रेस रखेगा. किसका? जो भी इसका टाइप दिखाएगा. अगर ये इंटीजर है इसके पीछे तो ये किसी इंटीजर का ही एड्रेस रख सकता है. सो अगर हमने एक कैर बी भी डिफाइन किया हुआ है, सो नो मैटर बी में क्या है या नहीं है, बट इट कैन नॉट कंटेन एड्रेस ऑफ बी. दिस इज रॉन्ग, दिस विल नॉट वर्क, राइट? बिकॉज पी का जो टाइप है वो इंटीजर है. सो ये इंटीजर का ही एड्रेस रख सकता है. सो पी कंटेन्स address of an integer, so it will contain address of 1010. okay, so बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि आखिर पॉइंटर की जरूरत क्या है, हम पॉइंटर बनाते क्यों हैं, कोई एक वेरिएबल ऐसा क्यों चाहिए जिसमें हमें एड्रेस रखने होते हैं. तो ये चीजें जैसे ही ड्यू कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे ये क्लियर होगा, जहाँ एरे यूज करेंगे और फर्दर कोर्सेज में जो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहाँ ये चीजें क्लियर होंगी. For the time being, just mind कि there are two different types of variable. One variable which contains a normal constant and of its type, and another variable whose name is pointer. It's contain the address of its type. जिस type का भी है उस type के variable का address रखना है. So with respect to that, we need to clarify 2-3 things. One, कि जब हम a print करेंगे तो क्या है? It will print 5. जब p print करेंगे तो क्या है? So it will print 1010, because while a is printing whatever is inside this box, in the same fashion p can print whatever in the box. तो जो इसके inside है वही print करेगा. Then ampersand a क्या होगा, address of p क्या होगा, right? So this will be, I can equate this. Equating is not good, right? So ampersand a will be the address of a. So what is the address of a? Address of a is 1010. So we can again write 1010, and address of p is nothing but this. So this is 3010. But the question is, can we access since p contains address of a? है ना, मतलब आपको अगर किसी का एड्रेस पता हो तो क्या आप उसके घर जा सकते हो?
That is what my question is. If P knows the address of A, can there is be any method in through which कि हम A के वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, right? So yes, that's the way. यहाँ for that we use dereferencing pointer notation, right? So star is such a notation. We also call this indirection operator. We call indirection operator, और we will dereference. Dereferencing meaning, देखो p में अभी हमारे पास वैल्यू क्या रखी है? Whenever we were printing p, so p contains 1010, right? So if we say star of p, तो star of p meaning star of 1010, right? तो यही डीरेफरेंसिंग का काम आता है. डीरेफरेंसिंग क्या करता है कि अगर मुझे ए की वैल्यू को एक्सेस करना है तो डायरेक्टली बाय मींस ऑफ द वेरिएबल ए हम तो एक्सेस कर ही सकते हैं. बट अगर मुझे पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हमें अगर एक्सेस करना है, इफ वी वांट टू एक्सेस यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल, सो हम क्या कर सकते हैं, हम डीरेफरेंसिंग यूज कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, ये इंडायरेक्शन ऑपरेटर है, ये जिस एड्रेस के भी पहले लगा हुआ होगा उसके अंदर के कंटेंट को निकाल के देगा. सो व्हाट इज इनसाइड 1010 इज 5. सो इसका आंसर हो जाएगा 5. सो दिस इज द स्कीम दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. Star is nothing but looking inside whatever we have. Clear? So I could tell you by drawing a rough memory location kind of thing. Just stick with me. So suppose this is 1010, 1014, 1018, 1022. Likewise, there are lots of such addresses, and नीचे अपने पास कहीं कुछ एक addresses है, suppose 3010, 3014, etc. तो अगर यहाँ this is A, this location is nothing but A in RAM. This is I am talking about random access memory, जो हमारा मेमोरी है उसमें, और यहाँ 5 रखा हुआ है. कैसे रखा है उसको भूल जाते हैं, इस मेमोरी लोकेशन में 5 रखा है. एंड दिस मेमोरी लोकेशन इज नथिंग बट P, और यहाँ क्या रखा है 1010. नाउ व्हाट आई वांट कि मैं P का नाम यूज करके, P वेरिएबल को यूज करके मैं A को एक्सेस करना चाहूँ. इजी है क्योंकि P क्या करता है, एड्रेस कंटेन करेगा, तो ये इस एड्रेस पे जाना है, वहां से वैल्यू निकाल. तो ये जो काम है यहाँ से इस एड्रेस पे जाना और वहां से वैल्यू निकालना, वो स्टार ऑपरेटर का काम है. ये यही काम करता है. सो जब कभी भी हम स्टार पी लिखते हैं तो वो पी की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं हम. इसको आप ऐसे एनालॉजी में समझ सकते हो. पी मीनिंग 1010 जैसा हमने यहाँ देखा. सो स्टार ऑफ 1010 मीनिंग इनसाइड 1010. सो दिस वे this will give you. So what is inside 1010 is 5. So we can yield 5. So by means of this star operator, we can derive the value of the variable whose address pointer p is containing. है ना? उस वेरिएबल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं जिस वेरिएबल के एड्रेस को ये पॉइंटर अपने पास रख रहा है, by means of this pointer variable. So we'll continue with more discussion on this topic later in this next video.